Okay, so Dr. Sunil that has already kind of revealed, right? Yes, the topic for this morning is managing stress for better human relations. But वही बात है कि before we even move on to managing our relations or being a better human, we have to do something simultaneously to eradicate or overcome this stress for ourselves, right? अगर हम खुद अपने आप में कहीं खुश नहीं है, अपने आप में कहीं स्ट्रेस फ्री नहीं है, then definitely we cannot do anything good for anybody else, right? Or maybe it's the other way around, that yes, if we are not if we are stressed up or if we are not happy, then definitely we would somewhere kind of damage, or we would even kind of do injustice to our relations also, right? जिसके लिए सबसे पहले I would like to start with a video, right? And video, I don't think so it has subtitles also, it's a Hindi video. But in case, again, if any one of you is not able to kind of connect with the video or the messages or whatever is being spoken in the video, if you're not able to understand that message, please I'll translate it for you later. So let's watch out the video first, and uske baad we'll get into the discussion ki what was the purpose of the video, and how you could kind of correlate with it. Okay. So okay, my video is visible. Yes, ma'am. And it's Yes, ma'am. audible as well. या हमें आवाज भी आ रही है? क्या हाल चाल चाचा? ऑडिबल मैम. क्या हुआ? ओके ग्रेट, थैंक यू. तबीयत तो ठीक है ना? बोलो तो आपकी चिट्ठी मैं पहुंचाऊं? तबीयत तो ठीक है बेटा. ये चिट्ठियां नजर आती तुझे? अरे बिल है बिल. लाइट का बिल, इंटरनेट का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल. आजकल पोस्ट में सब यही आता है. चिट्ठी पत्री तो आनी ही बंद हो गई. और वो क्या कहते हैं? ईमेल. हाँ, आजकल तो ईमेल का जमाना है. लोग चिट्ठी पत्री लिखना ही भूल गए. हमारा जमाना था, अपने हाथों से लोग चिट्ठियां लिख के भेजा करते थे और परिवार वाले भी उनका इंतजार करते थे. हाँ? और जोर से चिल्लाते थे हमको देखकर, अरे चाचा कोई चिट्ठी आई है क्या? किसी के एग्जाम का रिजल्ट, किसी की नौकरी की खबर, और कभी कभी तो लव लेटर और शादी के कार्ड देखकर लोग खुश हो जाते थे, मुंह मीठा कराते थे, बख्शिश देते थे. और आजकल इन बिलों को देखकर लोग नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं. अरे ये भी कोई काम है? हाँ? अब क्या करें चाचा, जमाना बदल गया ना. हाँ बेटा, ये तुमने सच कहा. जमाना तो वाकई में बदल गया है. अच्छा चाचा, 1 मिनट ये एक और लेते जाओ, आपके एरिया का ही. शादी का कार्ड? अजय सुनो तो एक बार. क्या हुआ? ये देखो. अरे क्या हुआ भाई? अंकल ये कार्ड मेरी बहन की शादी का है, जो पिछले हफ्ते थी. हम तो अटेंड भी कर रहे हैं. और आपके पोस्टल डिपार्टमेंट को देखिए, अब पहुंचा रहा है. कार्ड कितना सुंदर छपा है. छपा है. इसमें बड़े लोगों का नाम
अंकल ये लीजिए। ये क्या? अरे अंकल लेट ही सही, शादी की खबर लाए आप। अच्छी खबर है ना, तो मुंह मीठा करना तो बनता ही है। लीजिए ना अंकल, पूरा रख लीजिए, आप ही के लिए है। सच कहते हैं, जमाने बदलते हैं, लोग नहीं। Okay, so yes, this was one of the video, right, that I wanted to start with. Before even we get into the discussion, ki, what did you understand, या क्या आप किस part of the video से सबसे ज़्यादा connect हो पाए? I would first and foremost like to know कि yes, how many of you have lived in that era when you used to write letters or you used to receive letters? Any one of you who have lived in that era of letters, those handwritten letters, जहाँ पे आपने चिट्ठियां लिखी हैं या yes आपको चिट्ठियां आई हैं? Ma'am, my father served in the postal department, so I can understand this thing very Oh, in a better oh, manner. oh, wonderful, wonderful. What a coincidence. Great. So, yes, the excitement, right? I mean, specifically, yes, when even you're, sending across the letters, I think you feel that you are actually kind of, fulfilling a very, very, important role in that. So, yeah. And of course, Dr. Garima has also written that, yes, you have lived that era where that handwritten letters had so much of significance, or, we used to value them so much. So, okay, that was, of course, one part of the video. But then definitely the man who was from the postal department and who was, actually kind of, talking to his work companion. तो वो जो भी उनका डिस्कशन था इनिशियल बिफोर रिसीविंग दैट द वेडिंग कार्ड, वो क्या था? वाज ही, you know I mean, of course we could see that he was unhappy, right? So what was the problem area? अगर हमने वीडियो ध्यान से देखा और हमें समझ आया हो, सो वो जो यस दैट एल्डरली मैन जो कि यस पोस्टमैन थे, राइट, जो अपने वर्क कंपेनियन से बात कर रहे थे, तो बिफोर ही हैड रिसीव दैट वेडिंग इनविटेशन, वेडिंग कार्ड, व्हाट वाज हिज कंसर्न? वो क्या मतलब क्यों अनहैपी थे? क्या रीजन था? एनी वन ऑफ यू? Ma'am, जी, if I may say, या I प्लीज think डॉक्टर गरिमा, यस। yes. So what I actually feel is it's not that he didn't have work or letters to deliver. He was basically missing the emotion behind that job. तो जैसे उन्होंने एग्जैक्टली। बोला कि पहले शादी का कोई जाता था या किसी के जी, एग्जाम का रिजल्ट आया है, that जी, excitement and that kind of attention that you get, that you're bringing a news to somebody, those ट्रू, ट्रू, emotions really lack when we are just sending an email instead of ट्रू। putting effort in writing and doing something extra for our loved ones. And that's what So probably true, the postman was also missing. so true, and so well. You put it in the, I mean, the right frame of words, and actually kind of, touch the chord. That primarily it was not that he was missing upon work. He had work, but then what he was missing was the emotional connect with his work. Maybe that fun, that excitement, that thrill was missing somewhere. Right. Wonderful. Thank you so much, Dr. Garima. Anybody else wants to say anything? कुछ भी जो आपको लगा हो कि yes, वो जो थोड़े से नाखुश थे, or he was like, actually kind of, cribbing about the whole situation, right? Or cribbing or complaining about the whole situation. वो ऐसा क्यों था? Any one of you? Ma'am, the indifferent approach. Two. Indifferent approach. Okay. In what sense, Anupama ji? मैम लाइक जैसे जो जी, लोग हैं वो आजकल बहुत ज्यादा मतलब indifferent हो गए, they do not care for anybody. हाँ, किस true, true. Yes, yes. You want to say something more? insensitive, ma'am. The
जो लोग हैं बहुत ज्यादा insensitive हो चुके हैं to the problems of Right, others. right. Ma'am, it is not necessary that it is the thing that you need someone to share your emotions with. True, आपको कई true, बार जिंदगी में ऐसा होता है कि आपको अपनों से आप शेयरिंग नहीं कर सकते, पर आपको बाहर कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जिससे आप बहुत अच्छे से शेयरिंग कर सकते हैं. जी, तो जी. मैम जब लेटर्स हम लेने जाते थे या हमारे पास आते थे, तो दैट एक्साइटमेंट कि कोई आ रहा है और उससे हम कुछ पूछ रहे हैं कि क्या हमारी चिट्ठी आई है, कि Exactly. ये है या नहीं है, दैट. बट अब तो Right, कुछ है right. ही नहीं ऐसा, वो इनसेंसिटिव हो, किसी को कोई परवाह ही नहीं है, किसी की, किसी इंसान की नहीं है, किसी चीज की नहीं है. इवन Exactly. लेटर्स ने Right. अपनी इम्पोर्टेंस ही खत्म कर दी, खत्म हो गई उनकी. Right. True, true, true. So true. Thank you so much, Anupama ma'am. Ki, in fact, of course, you found that right word, right? It was that insensitivity, जहाँ पे yes, we don't value each other's emotions anymore, right? कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे को क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, right? And कहीं ना कहीं वो gradually we are finding that disconnect, even in our conversations, in our communication. वही है कि as Dr. Garima also said कि वो एक email में वो emotional connect हो ही नहीं सकता जो कि एक hand written letter में होता है, right? And that is what that postman was also feeling, yes, कि अब मतलब yes काम तो है लेकिन काम कहीं ना कहीं मजा नहीं है, कहीं वो एक्साइटमेंट नहीं है, राइट? एंड ऑफ कोर्स दैट इमोशनल belongingness नहीं है कि yes, I'm just doing it for the sake of doing it. Maybe I'm just carrying bills and I'm carrying official letters जिसको देखकर maybe people are not very happy about it also. तो in return जो आपको अपनी वर्क प्लेस में या वर्क एनवायरमेंट में एक तरह से that एक एनवायरमेंट ऑफ हैप्पीनेस मिलना चाहिए, राइट? एक आपको कहीं ना कहीं फील होना चाहिए कि यस, पीपल केयर अबाउट और पीपल वैल्यू योर वर्क, इन फैक्ट आई वुड से, right? But when you're carrying a kind of a bill to people around, they would always feel कि you've become a burden only. तो वही चीज है कि आपके काम की जब वैल्यू कम होने लगती है, राइट, तो कहीं ना कहीं वो चीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा एक अनहैप्पी मोमेंट क्रिएट कर देती है और यू स्टार्ट फीलिंग आप अपने आप को कम वैल्यू करना शुरू कर देते हैं. यू स्टॉप रिस्पेक्टिंग और मे बी वैल्यूइंग योरसेल्फ, राइट? सो ये हमने जो टोटल अभी सिचुएशन देखा इन दिस वीडियो, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. बिफोर दिस पोस्टमैन हैड रिसीव्ड अ वेडिंग card, invitation card, right? उसके बाद when he takes that wedding invitation card to the respective family, जहाँ पे again he's little disheartened, right? क्योंकि वो सामने से रिस्पॉन्स ये आता है कि यस, वो शादी तो हो भी चुकी है जिसका आप इनविटेशन लेकर आ रहे हैं. तो वो अपने आप में फिर काफी डीमोरलाइजिंग था, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन था कि यस, हम सचमुच हमारा जो पोस्टल सर्विसेज हैं उसमें कहीं डिले है या लैग है, राइट? जबकि आज थिंग्स आर मूविंग ऑन सो फास्ट, राइट? लेकिन उसके बाद अगेन सिचुएशन चेंज्ड, राइट? Something which was least expected, something which was absolutely out of the box. वो क्या था? That second part of the, or maybe the last part of this video. How important or how heartwarming was it? The Ma'am, I last part of think the video. Ji, ji, ji. what I think Yes, is sir. at times we are caught up in the technology and we feel that late हो गया और कार्ड अब मिल रहा है, शादी हो चुकी Ji, है. ji, पर ji, ji. you cannot compare the joy of holding that card in your hands, and that's when you realize what is the importance of having actually received the invitation through that postal service instead of just True. जो भी location WhatsApp पे मिली थी. So Ji, that joy ji. is what immediately brought in the change in the whole scenario. And Yeah. also the fact that they were ready to share that joy by sharing the sweet box. So that is what Exactly. changed the whole essence there. Wonderful, wonderful. Thank you so much, Dr. Garima. That was indeed very, very, I would say, sweet. And, I mean, actually, so good to hear it, the way you expressed it. Anybody else? कोई और कुछ कहना चाहेंगे? Anything, right? जो भी आपको लगा, whether, whatever your perception about that situation. It's an open house, and of course, जितना हम share करेंगे उतना ज़्यादा yes, हमारा जो thought process है वो broaden होता है. Anybody wants to say anything?
Okay, no worries. We'll move on. अब जो डॉक्टर गरिमा ने बताया, in fact, everything revolves around that only, and that is primarily that crux of this whole video. कि वही चीज़ है कि आज हम जितना मर्जी कह लें, times have changed, we have become, more digitally connected, and we're all existing in a very fast-paced world. लेकिन उसी digital era में आज भी things, which kind of invoke those emotions, जो हमारे अंदर का, I guess, वो भावनाओं को जगाते हैं, right? और वो जो एक real joy which exists in that real world, right? Even if you've received an invitation on WhatsApp, but then वो जो hard copy, right? I mean, that holding that invitation card and then seeing admiring the whole design, the pattern around it, that can never be felt or experienced in the soft copy of it. तो वही बात है कि वो जो कहीं रियल टाइम एक्सपीरियंसेस हैं, समवेयर वी आर मिसिंग दैट इन दिस डिजिटल एरा, राइट? जिसके चलते आज जो बहुत कुछ हो गया है कि समवेयर इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग गोइंग राइट, वी फील मेनी टाइम्स, वी फील absolutely kind of disconnected or lost, or we feel that there is a lot of sense of dissatisfaction. अगर हम देखें इस वीडियो में जो टोटल सिचुएशन था, दैट पोस्टमैन, दैट एल्डरली पोस्टमैन वाज समवेयर रियली रियली डिससैटिस्फाइड विद हिज प्रेजेंट जॉब सिनेरियो, राइट? जॉब भी था, स्टेबिलिटी भी है, राइट? यू आर इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? आपके पास अभी भी, यस, थिंग्स आर स्टिल मूविंग ऑन, लेकिन उसी में जो आपका एक इमोशनल थ्रिल है, एक इमोशनल बिलोंगिंगनेस है, अगर वो मिस होने लगता है, तो in spite of all your materialistic perks and benefits, things don't kind of convince us, right? और वही आज हम लोग बहुत ज़्यादा में भी हर प्लेटफॉर्म पे या हर सिचुएशन में ज़्यादा महसूस कर रहे हैं. And then I think there was this last statement in this video which says, ज़माने बदलते हैं but लोग नहीं. Times are changing, and primarily we see there is this major significant change in the terms of technology, right? So वही technology में जहाँ इतना boom आ गया है, इतना things are moving fast pace, वहीं पर primarily we are losing that human connect, that that's why in fact I always say कि yes, in this world of electronic connections, we need to find our e-connect. Can we now correlate what is the other e-connect? When I said in this world of these electronic connections, we need to find our e-connect. So what is that e-connect? Emotional connect. Emotional connect, exactly, very true. And somewhere when that goes missing or dwindling, right, जहाँ वहाँ imbalance create हो जाता है, तो I think in spite of the best of the facilities, the best of the gadgets, we still feel dissatisfied, we still feel discontented, right? Now coming back to our real scenario, our real work situations, and usme how much are we satisfied, how much are we maybe as an academician, as an educator, as a teacher, how am I personally kind of happy about it, or maybe I still feel that nay, things are not going the right way, right? जिसके लिए we need some freedom, we need some ease from जो तो इतना एक कहीं ना कहीं chaotic situation बन चुका है आसपास, right? Where things have become more they're moving much more faster what we can actually kind of pace up with, right? और उसी में अगर हम बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज everybody is too much occupied, too much kind of अपना ही, हर कोई अपनी जिम्मेदारियों से इतना घिरा हुआ है कि शायद हमें किसी से बात करने का या किसी के साथ मतलब वो इमोशनल कनेक्ट शेयर करने का भी मौका नहीं मिल पाता है. तो उसी में सबसे जरूरी बात यह है कि हम we should be absolutely free from even our dependence, right? Even from our emotional dependence. Now that's something, yes, which is like little tricky, या कहीं ना कहीं सुनने में भी थोड़ा अटपटा लगता है कि how can we get free from our emotional dependence, which is one of the prime requirement of every human. But वही बात है कि once you have uh, upgraded yourself, you have elevated, I think उसमें
जब आप किसी और से विदाउट एक्सपेक्टेशंस कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, देन दोज रिलेशंस, दोज एसोसिएशंस फ्लरिश बेटर। प्रॉब्लम ही वहां आता है जहां पे हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे भी वो जो पोस्टमैन थे, कहीं ना कहीं यस, ही वाज एक्सपेक्टिंग पीपल टू appreciate him, people to compliment, or people to say that you are doing something very significant, जो कि maximum times हमें नहीं मिलता है in return. Maximum times, because especially in today's scenario, it is like everybody is like updating their status. हर किसी को ये है कि yes, मेरे को कितने likes मिले, मुझे कितना appreciation मिला, या और उसी में शायद हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम किसी और को appreciate कर सकें, किसी और को value कर सकें। और वो जब हमें in return नहीं मिलता है, right, that appreciation, that acknowledgement, then we start feeling somewhere stressed up, or absolutely dissatisfied with the scenario. So first and foremost, we need to seek that freedom from our emotional dependence, and take more of controls in our own hands, ki jahan par हम अपनी life को अपने accordingly manage कर सकें। और उसमें भी yes, there has to be a greater sense of achievement, there has to be a greater sense of accomplishment, जिसके लिए I would like to share this freedom diagram with all of you. Window. No, I don't think so. Okay. Yes, now is my slide visible? Yeah, Dr. Garima, is my slide visible to all? Yes, now it is. Okay, Yes, great. ma'am. Thank It's you. visible. Thank you so much. Okay, thank you so much. So I was saying, seeking that freedom from primarily, yes, our dependence Sorry or to interrupt reliance you, on ma'am. the. It's not in slideshow mode, is it? It is in slideshow. Is Ma'am, it? we are seeing the main window of PowerPoint. Maybe it's because Okay, you shared a I'll. window and slideshow is a different window. Okay, Yeah. I'll Maybe I'll we I'll can do that. see the I'll do entire that. screen. Sure. Understood. I'll sure open the entire screen only. So again, I've done the screen slide share. I Perfectly all mean, right, ma'am. is it okay? Okay, great. So now that freedom diagram, freedom from all sort of external dependence, I would say, not only just emotional dependence, but primarily, yes, wherever we're dependent on to others, I think there the imbalance, strikes, and kahin na kahin, yes, wahan par we start feeling more dissatisfied, discontented, or maybe stressed out, right? Uh, for anything that you're doing. In fact, now this is not just related to your professional work scenario, it is even to your personal space में भी जो भी आप करते हैं, तो उसमें yes, हमें कैसे कहीं ना कहीं एक better sense of satisfaction, better sense of achievement मिल पाती है, when first and foremost we have the talent to do what we are doing, anything that we're doing, right? I again repeat, whether it is in our professional scenario or it is in our personal space. Now suppose yes, I'm a teacher, right? And of course, to be a good teacher, I have to have good communication skills. I should be able to transmit my knowledge in a in a more interesting and exciting way, right? I should be able to mentor or guide my students in a great way, right? So that's my talent, right? How do I do it, and how do I actually kind of create more value for people around, right? So that's basically how skilled or expert I am in whatever I'm doing. Now that's maybe in my professional scenario. Similarly, in my personal space, maybe apart from teaching, I'm good in art, painting, right? Or I'm good in any other form of extracurricular. It can be dancing, music, sport, anything, right? So जिसमें मेरा एक अपना skill set है, एक अपना मेरा knowledge है, एक मेरा उसमें experience है, right? So all these things put together actually make me more talented or make me more versatile, right? So what I can do good naturally happens to be my talent, right? Next is what Dr. Garima said, कि वो जो postmen थे वो काम भी कर रहे थे, उसके लिए वो talented भी थे, skilled भी थे, लेकिन शायद उन्हें खुद उसमें मजा नहीं आ रहा था, right? Somewhere he himself was feeling that lack of excitement, that lack of emotional connect, जिसमें वो thrill जो या कहीं ना कहीं एक
एक passion होता है to do things, right? And if you're missing that thrill and passion, then definitely you'll not be able to enjoy what you're doing. So that fun element has to be very, very fun. Does not mean that we need to crack jokes or we have to do things for entertainment. Fun is when, yes, I'm enjoying it, मुझे मजा आ रहा है in whatever I'm doing. That's the fun element. And then finally, whatever I'm doing, where I am talented, I'm skilled, I'm capable, and then the good part is I'm even enjoying it, there is a need for it, right? People value my work. People, want to maybe pay me for my work, for my, skill set or capability. We all know that even if I am good in anything on an extracurricular part, right? Whether it is painting or, what else, some creative designing or something, right? If I get extra paid for it, then definitely it gives me that stronger sense of achievement कि ये मेरा जो काम है आज इसकी value है, right? Similar is what you do professionally also. Profession में भी वही चीज है कि आप अगर एक certain level तक qualified हैं, एक आपका एक certain skill set है, and then based upon your knowledge and experience, right? How come, yes, you are upgraded from a certain level to the next level. तो जब जहां आपका ये promotion होता है, जहां आपका there is a hike in your salary, you start believing, right, all the more strongly that yes, I am somebody capable, and then simultaneously my skill set, my capability is valued, right? उसका एक need भी है, उसका एक demand भी है, right? Now wherever these three aspects, they kind of merge together, they come together, or they blend together, that green area in these three circles, that green shaded area where talent, fun and demand come together, that's the ultimate stage of having freedom from any outside or any external individual or situation. आप हमेशा खुश हैं, आप हमेशा संतुष्ट हैं, आप अपने आप में हमेशा, yes, you have that sense of high or feeling boosted about yourself, right? आपके hardly there'll be any times when you'll feel low in your spirits or low in your morals. You would always feel more excited, enthusiastic and energetic to whatever you are doing, right? Now the concern is, like, if we have to simplify this whole term, this whole concept of freedom diagram, I would like to ask, how many of you are teacher by choice and teacher by chance? How many of you happen to be a teacher by choice, and how many of you happen to be a teacher by chance? I'm a teacher by choice for sure. Ma'am, teacher by choice. ओके, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल. और अब जो लोग नहीं बोल रहे हैं या जो लोग मैसेज बॉक्स में अपना रिस्पांस नहीं डाल रहे हैं, आई विल कंसीडर देम टू बी टीचर बाय चॉइस, टीचर बाय चांस. यस. So इसका मतलब है we at least need to once respond that yes, are you a teacher by choice or by teacher by chance? Okay, great. I got a response from Gaganji also. So Gaganji also says teacher by choice. Abhi bhi main wahi keh rahi hu. Those who are not responding, we would automatically consider them to be teacher by chance. Okay, now this is a very, very significant. इसको हम चाहे जितना मर्जी lightly या जितना मर्जी we think it was just one word response, but it actually has a lot of significance, a lot of purpose. There's a drastic change in these two words: a teacher by choice or a teacher by chance. Now, specifically those who have immediately like prompted and have taken this credit कि नहीं नहीं नहीं, I am a teacher by choice. आप बताना चाहेंगे कि yes, ये क्या what is that real essence, real purpose when I say that I'm a teacher by choice. So primarily, how does your personal choice and your professional choice coincide? कैसे आपकी जो personal एक इच्छा थी to be a teacher, and today professionally you are a teacher, how come there is a a very strong connect between the two? Any one of you, when you take this credit of saying, and that too on a public forum, right? So जब आप ये चीज को एक तरह से public announcement कर रहे हैं कि I am a teacher by choice, then that means there has been a
coinciding between your personal choice and your professional choice, right? In fact, personally, something which you opted for today became your profession. So वो कौन सी personal choice थी which kind of compelled you to become a teacher? Any one of you? Ma'am, the Yeah, mere yeah, joy of sharing the knowledge which you have with your experience and the kind of right, response you get from the student. I think the right. most important thing, which I believe is if you do not, choose teaching by choice, by your own Hmm. interest, probably you will Yes, never be able to develop student have the same kind of feeling for the true, subject. So true, either we true. can develop a fear for a subject or, we can develop love for a subject where the process of Right, learning really, really becomes, a fun process and the students start exactly. seeing their future while studying. Right, So it I think only comes when you really have that passion to, that true. satisfaction you get by looking at students who are satisfied, they are happy in your class, they are ready to come back to you, not only for the subject, but for their real life problems also. And Right, that's right. something which is really, really precious. Wonderful, wonderful. And throughout all the while that you were speaking, Dr. Garima, I could feel that, that a sense of excitement and that a sense of actually, yes, that hardcore passion that this is what I love doing it, right? In fact, this is what wherever I go, I tell people that passion is your never ending love story. Right. In fact, your Absolutely. never ending love affair. Right. I mean, any other love association that you have even with your parents, your siblings, or your life partner, gradually that excitement, that thrill starts somewhere, kind of uh, थोड़ा थोड़ा फिज आउट होना शुरू हो जाता है, लेकिन जितना हम अपने पैशन को लेकर, यस वी हैव दैट always that high in our nerves and our bloodstream flowing stronger, right? एकदम से yes there is a a kind of a वो जो दिल की धड़कन तेज हो जाती है when you're doing something which you love doing so much, right? So that's what is your never ending love affair, and that's your passion. And when you do things passionately, you definitely create that energy, that excitement for people around, right? और अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो भी वो स्किल सेट है, आपका जो भी वो पोटेंशियल है, more people would look up to it, more people would want to associate with such people, or maybe be around such teachers, especially students, right? Who, as it is like now these days, it's not about knowledge and information, right? In fact, when we talk about knowledge information, that's all available on a click, right? Now, how come as a not only a teacher but as a passionate teacher, you're giving them back that joy of learning, that that love for a subject? This is what all I just picked up from Dr. Garima, right? So वही चीज है कि अगर आप खुद अपने subject को लेकर you don't have emotions or you don't feel that connect, you would never be able to pass it on also, right? So it is something personally, it's very very intrinsic. पता नहीं हमने इसको कभी उस तरह से रियलाइज किया कि नहीं, कि जिसको आज हम प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, या every day we go back to our work places, take up classes, and we feel somehow that yes there is a lot of workload, but very frankly beyond that workload, I chose this work, I chose this profession, I wanted to do something like this so that I'm able to transmit my knowledge, my ideas, and then create more passionate people like me, right? So वो जो yes कहीं ना कहीं मेरे लिए important है, तभी मैं उसको किसी और के लिए important बना पाऊंगा या बना पाऊंगी, right? uh, and then definitely what happens to those who actually opt for this profession by chance or by compulsion? उनके साथ क्या होता है? वो जो यस टीचर्स तो बन जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद उन्हें किसी और प्रोफेशन में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, right? And then they end up yes being teachers by chance, because they did maybe yes because they could not think of the other option, or they could not kind of make it through what they wanted to do, right? So either it was by chance or by compulsion because it was primarily the need of my my family, myself, right? I had to fulfill certain responsibilities, so जिसमें मुझे लगा कि maybe right now this is the only option available and I should pick it up,
right? So what happens to those, or what do such teachers end up doing who become teachers by choice, sorry, by chance or by compulsion? यस वो टीचर्स क्या करते हैं जो बाय चांस या कंपल्शन टीचर बन जाते हैं? Ma'am, they are not able to do justice with their profession. एग्जैक्टली, वेरी ट्रू मैम। और मैम वो खुद के साथ जस्टिस कर पाते हैं? No, ma'am. They somewhere down the line, they are always frustrated and they take out their frustration everywhere. And I think they are the ones who take out their frustration mostly on the students. Exactly. Thank you so much, Anupama ma'am. That was very, clear and straightforward. कि yes, वो ज़्यादा से ज़्यादा frustration अपने students पे ही निकलता है. This is but natural. We humans are like that only. कि yes, जो हमारी जितनी anxiety, जितना yes, कहीं frustration होता है, primarily we take it out with the ones who are weaker than us. Right? So kahin na kahin in a teacher student scenario, we always know कि a student somehow has more compulsions or somehow is more restricted in their own ways, right? So yes, if I am dissatisfied as a teacher, or I am frustrated with myself, I would end up taking it out with my students, because kahin na kahin they are at my mercy, right? They have to listen to me, or they have to yes at least attend my classes, because that's their compulsive requirement. तो वही चीज है कि उसमें I would never be able to ignite that further, that love for the subject or that passion for learning, right? Because I myself don't have it. So जो मुझ में है ही नहीं, वो मैं आगे कभी transmit कर ही नहीं सकती हूँ. Now this is something very very strong reality. What I said is कि which is lacking, something what is lacking within me, how can I ever pass it on further, right? And I'll be only able to pass it on what I have within me. So if I have passion, I'll be able to pass on passion. If I have frustration, I'll be able to only pass on frustration, right? So I think now we are gradually connecting with the topic for the session, right? That is managing stress for better relations. अगर आप खुद में डिसकंटेंटेड हैं, खुद में डिससेटिस्फाइड हैं, खुद में स्ट्रेस्ड अप हैं, तो वही आप आगे पास ऑन कर पाएंगे. और वो जो इंसान दूसरों के लिए स्ट्रेसफुल बन जाता है, दूसरों के लिए रीजन फॉर डिससेटिस्फैक्शन या डिसकंटेंटमेंट बन जाता है, उसके साथ कभी भी हमारा एसोसिएशन या रिलेशनशिप फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकता है. Now the need is to first and foremost know what is it that what you want to do for yourself. So don't end up doing things just by chance or compulsion. आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जिसके लिए now we would take up another very interesting concept, and it is a Japanese concept which is known as ikigai, right? I don't know if you any one of you heard this concept pehle, ikigai. Anyone, before even I open up my slide, have we heard about this concept, ikigai, which is a Japanese concept? Yes, ma'am. Okay, great. Anupama ma'am, any idea what do we understand by this concept? Ma'am, is the Japanese way of living your life and Right, with the full spirit and with freedom, where you have freedom of choices, like whatever you want to do, you just do right, it. What your right, heart says, do it. right. Do it exactly. Wonderful, Anupama ma'am. And वही बात है कि what you want to do or what your heart calls out for. लेकिन अब सबसे पहली बात ये है कि क्या हमें पता है कि हमारा दिल क्या करना चाहता है, या हमारे लिए क्या important है? Something what we really want to do, or what I want to achieve in my life, or maybe what is my purpose of life, right? Now this is something again very very important, very very crucial, that if we've all entered into this world, into this huge universal space, तो कहीं ना कहीं हम सबका कुछ purpose है, कुछ there is some personal calling, or there is some reason for why we entered into this world. ऐसा तो नहीं है कि yes हमारे heavenly creator ने हमें ऐसे ही बना दिया without any purpose, without any उद्देश्य,
राइट। अब आज वही है कि मैक्सिमम हम सबको अपनी जिंदगी का वही उद्देश्य, वो पर्पस ही नहीं पता है, बस आए हैं, राइट। Yes, maybe we open our eyes, we're born into a family, we're taken care by somebody else. Anybody who's beyond you is somebody else. So our parents take care of us, nurture us in certain ways. Uske baad we are kind of enforced to be into this education system, keep learning for good 20 to 25 years. Uske baad now next stage is to, yes, find a career, to find at least a profession to earn a living. Uske baad then next stage. So that's how we keep passing on from one stage to the other stage without even realizing कि yes, why am I going through all this, ये सब मैं जिंदगी में क्यों कर रहा हूँ, right? जो कि again is for all of you right now. You've also passed on through those stages of being a student to now being a teacher, right? Which is now again, is that a profession or a service? Teaching, right? Teaching again, we all know कि yes, जो हम जिस तरह के learning उससे आते हैं, culture से आते हैं, right? जहाँ पे we even had this gurukul culture also, right? So जिसमें in fact अपनी जो अपना ज्ञान है, अपनी जो कहीं ना कहीं सूझबूझ है, समझदारी है, जब हम उसको आगे ट्रांसमिट करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा योगदान होता है, एक बहुत बड़ी सर्विस होती है. But now, yes, how many of us are really doing that service, or how many of us are just fulfilling our professional requirement? Teaching as a profession or as a service? Ma'am, teaching as a service. Teaching as a service. Okay. You personally believe in that, Anupama ma'am? यस मैम, क्योंकि मेरे ख्याल से मैम टीचिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप बहुत कुछ देते भी हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं. इट इज लाइक हम लोग ज्यादातर टीचर्स की ये धारणा होती है कि हम टीचर्स हैं तो हमें ही सब कुछ पता है. जबकि स्टूडेंट्स के साथ जब आप इंटरेक्ट करना शुरू करते थे, देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम देम आल्सो. और उसके बाद मैम लाइक वी कैन लाइक जैसे हमारे सबके होंगे एनएसएस यूनिट होता है मैम. सो एनएसएस यूनिट में हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? सर्विस करने सिखाते हैं कि हाउ आपको दूसरे लोगों के साथ कैसे हेल्पफुल रहना है, उनको कैसे हेल्प करनी है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर इन आवर. Right. Wonderful. And I'm glad to know that, Anupama ma'am, you are associated with NSS volunteers also. And then उसमें वो जो service factor है वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा important हो जाता है. And similarly, Dr. Garima also believes that teaching has to be a service, right? And वही चीज़ है कि okay, even if you are practicing it as a profession today, but then even in your profession, you have to have certain values जो कि आपके कुछ पर्सनल बिलीव्स हैं, कुछ पर्सनल प्रिंसिपल्स हैं, जिसको या हिंदी में अगर मैं कहूंगी तो आपकी जिंदगी के नियम, असूल, संस्कार, राइट? आप कभी भी प्रोफेशनली भी साउंड या एथिकल हो ही नहीं सकते हैं if you don't have certain personal values and personal principles in life, right? So उसी में आप अपने इस प्रोफेशन को क्या देखते हैं? Is it only for the sake of earning money or sake of earning a livelihood, or is it that you really want to uplift lives, or you really want to make a change in the lives of many more, right? Then only it becomes a service जिसमें बहुत कुछ आपको out of the way भी जाके करना पड़ता है, बहुत कुछ आपको personal extra efforts भी लगाने पड़ते हैं. Then only we think, yes, that I'm doing something beyond my professional capacity, or maybe I'm being more service oriented, right? So वो जो एक मेरा अपना personal value है, मेरा एक अपना personal belief है, and that's what I'm practicing it in my profession also, राइट? अब जिसकी वही बात है कि जो मेरी रियलिटी है या मेरा एक वैल्यू सिस्टम है या मेरा एक पर्पस है, एंड दैट इज व्हाट इज इकिगाई, राइट? उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं. So I think my screen is visible again. Yes, ma'am. Yeah, great. Yes, ma'am, it is. So yeah. So ikigai, which is a Japanese concept and which is known as your reason for being, right? अगर हिंदी में इसको कहूँ कि आपके होने का जो कारण है या आपकी जिंदगी का जो उद्देश्य है, that is your ikigai,
right? Which is segregated into 4 different aspects. Number 1 is our passion, right? Passion जिसको हिंदी में हम जुनून कहते हैं, right? वही जो मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है या बहुत मजा आता है. एक चीज और है, पैशन को अक्सर हम लोग कहीं ना कहीं confuse karte hain with hobby, sorry. And normally we use these two terms as like synonyms, hobby and passion. But then there's a difference between hobby and passion. Anybody who knows the difference between the two? And you will have to unmute yourself and speak up, otherwise maybe I'll have to come back to the main screen, because जब मैं slide sharing लगा देती हूँ तो मुझे अपना screen नहीं दिखाई देता है. So any one of you who would like to share your opinion, share your thought process in relevance to difference between passion and hobby? Ma'am, in my Yes. opinion, Ji ma'am. hobby is something which probably we do when we have free time. We just find some happiness and we are happy doing it in our fun time. But when we Exactly. talk about passion, passion is something we pursue for a very deeper satisfaction. And I think So that true. is why, when So we say we have a passion for teaching, it's not true. something we are doing in the free time. We want to do True. it because we Do have it. a sense for it. Yes, exactly. Wonderful, ma'am. Thank you so much. Again, something very, very, elaborate and intensive. And वही चीज है कि yes, passion जिसे करने में मुझे और मजा आता है, मुझे और ज्यादा ऐसा लगता है कि yes, I need to do it more often, right? And in fact, passion ऐसा है जिसके लिए आपके पास जब वक्त नहीं भी होता है, आप वक्त निकालते हैं. You would even, I mean, that's what you would take out time to practice your passion even when you are running short of time. राइट लेकिन हॉबी ऐसा है कि यस जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तब आप अपना एक हॉबी डेवलप कर लेते हैं या कुछ हॉबी टाइम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं. सो पैशन जिसका हिंदी ही जुनून है, जो आपकी, मैंने वही कहा था कि रगों में जो आपकी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा आपका खून ज्यादा तेज दौड़ रहा है, यू कैन रियली फील योर ब्लड फ्लो मोर इंटेंसिवली, या वही चीज है कि आपके एनर्जी लेवल्स और हाई होते हैं. दैट्स बेसिकली योर पैशन. उसमें आप कभी थकते नहीं हैं, कभी घबराते नहीं हैं. You want to just do it at all, matlab risks or all sort of like, whatever maybe the times around, you would really love to, practice your passion more often. Next is your mission जो आपकी जिंदगी का एक लंबा उद्देश्य है, right? Now again, जिसमें some would have a mission to go on a world tour, right? Maybe something which you plan to do in the next 10 years or maybe over and above, right? Next, somebody would like to have maybe they have a mission of constructing their own house, right? अपना एक घर होना चाहिए, हमें rented accommodation पे नहीं रहना है, तो वो एक आपकी लाइफ का मिशन हो सकता है. Maybe another mission can be, I want to settle my kids, in a good way, right? So that can be a mission. So mission जो एक आपका एक long term objective है, एक long term उद्देश्य है, that can be mission of your life. Fourth is vocation. It is not vacation, sorry, not fourth, third. It is vocation, right? Now, vocation is primarily your skill set, your knowledge, yes, your experience. Now, that is basically, yes, what makes you more capable, more, valuable. जो आपका एक अपना skill set and knowledge है, that is your vocation. Next is profession. Last is profession. Now, which something you want to practice as your source of livelihood, as your source of having a stronger recognition in the world outside. अगर हम देखें तो आज बाहर की दुनिया में जो हमारी पहली पहचान है वो हमारा प्रोफेशन है. Wherever we move around, wherever we meet new people, we specifically like to introduce ourselves, what professionally we are. I am a an associate professor, or I am a lecturer, right? Now that's my first recognition. जो आपकी पहली पहचान है वो आज आपका प्रोफेशन है, right? अब ये जो चारों एस्पेक्ट्स जहां पर भी मिलते हैं, जहां पे भी दे कम टुगेदर, दैट इज योर इकिगाई, दैट इज योर बिगर पर्पस, योर बिगर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ, जिसमें आपका पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन आता है. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये चारों का आपस में सम्मिलित होना, आपस में इकट्ठा होना is like difficult. लेकिन चार में से अगर आपके 3 एस्पेक्ट्स भी मिल पा रहे हैं तो you are at a very high stage of ikigai.
और 3 से अगर कम है, राइट, 2 हैं, तो somewhere you need to immediately add on one more component, one more aspect of ikigai. And अगर 1 है, तो believe me, you are the most stressed up or the most, dissatisfied person around, right? जैसे कि वो पोस्टमैन उस टाइम पे हो चुके थे, क्योंकि शायद उनका जो मिशन और पैशन उसमें कहीं पूरा नहीं हो पा रहा था। सो वही बात है कि अब आपको कोशिश ये करनी है कि इकिगाई के ये चारों कंपोनेंट्स में से कम 3 कंपोनेंट्स आपके आपस में ब्लेंड हो पाए। So how many of you feel that yes, out of these 4 aspects of passion, mission, vocation and profession, you are able to achieve a kind of a conglomeration or a blend of at least 3 aspects, जहां पे आपको लग रहा है कि एटलीस्ट 3 एस्पेक्ट्स आपके एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे हैं, राइट? इट कैन बी एनीथिंग, योर प्रोफेशन, योर वोकेशन, योर पैशन, मे बी मिशन, अभी पता नहीं, राइट? या फिर एनी 3, so which you think you're able to put them together. I think we are close to it, ma'am. Okay, yeah. Because, like for me, I always enjoyed and loved teaching. That has been something I was Right, always very passionate about. And right, the kind of responses I've got from my fellow colleagues and students, especially, I think right, I'm okay at that. I won't say good, good is for others to tell. And right. of course, I am able to make my living out of it. So, yes, quite close to Yeah, that. it's oh, wonderful, wonderful. And do you think, ma'am, that would actually somewhere help you to accomplish your mission in life as well? I think Whatever so is for your sure. long-term objective? Oh, wonderful, wonderful. So you're already almost on the verge of completing that highest level of ikigai. That's where your all 4 aspects get into kind of collaboration with each other. Wonderful, congratulations, right? And I Thank you, believe ma'am. that must be making a difference in your life. Does it impact you in some way? It कुछ does, ऐसा it लगता does. है? I Uh-huh. feel only at times the kind of struggles we face is that, yes, Uh-huh. when you don't get the next promotion or, you're Right, expecting a huge hike and you don't get that. So right. that kind of dissatisfaction does happen. And I think True. that's where we just need to find an alternative way to find a solution to it. And it has nothing Right. to do with the job because that is a field like teaching is what I have chosen. So it's not something that I have to Right. blame that, because I'm, into teaching, I'm not, getting this. I think that's a very wrong way of saying things. Probably I can just switch and I can True. find a better opportunity for myself in the same profession. So True. I think True. it just believes the kind of unrest we have and the solutions we are trying to look at. Hmm. Wonderful. Yes. And I think that too also time and again, maybe we need to keep reminding ourselves that why, this profession, because yes, it's my passion, Yes, right? I love doing it because yes, this is very, very natural, very normal ki all days are not those smooth days, right? We'll all have our hiccups, kahin na kahin, yes, ups and downs chalta rahega. Or usi time pe, in fact, we need to right, keep reminding ourselves, does this go along with my ikigai? Right? Or is it that something, right. yes, it helps me to, yeah, so have that freedom from where, yes, I know that I'm good, even if anybody else does not give me that acknowledgement or appreciation, I know Right. I'm doing justice to my yeah, right. So yes, in fact, and that's what keeps us high in in all circumstances. Yeah, Absolutely. anybody else? Yeah, thank you so much, Dr. Garima. Anybody else would like to, yes, share, yeah, कि आपको कितना लगता है, how much you're close to your that ultimate level of ikigai, or you think कि नहीं, maybe we need to reconsider our options? Anything? गगन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने इनिशियली कहा था कि पंजाबी में बात करेंगे, राइट? एंड ऑफ कोर्स हम वैसा नहीं कर पा रहे हैं, बट देन यू बीन शेयरिंग योर इनपुट्स, तो मतलब या, यस गगन सर, या सबसे पहले तो मैम सेशन काफी इंटरेस्टिंग था, अच्छा लगा, मैंने पूरा अटेंड किया। ओ ग्रेट, ओके, थैंक यू जी। तो तो सर आप कुछ मैम बताइए जी। जैसे ना ये बातें मतलब बहुत अच्छी है,
और पता नहीं व्हाट आई फील कि ये जो बातें है ना वहां पर पॉसिबल है जहां पर आपके पास पूरे सोर्सेस हों। लाइक मैंने जो टीचिंग का प्रोफेशन था वो मेरा बाय चॉइस था। राइट सर। बट जहां पर मैं राइट नाउ हूँ वहां पर टीचिंग का भी मुझे लगता है कि नहीं है वहां पर। ओके ओके, राइट सर। तो राइट यहाँ पर ना जी, फिर क्या होता है कि लाइक जैसे मैंने अपनी चॉइस से टीचिंग प्रोफेशन चूज किया था, है ना। तो राइट राइट। फिर वहां पर तो फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि जो मैं काम करने आया था मुझे वो ही नहीं करने दे रहे। राइट। सो आपको लगता है सर कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ज्यादा बाधाएं हैं, राइट, जिसके चलते यस जो आपका पैशन भी है वो कहीं ना कहीं यस हाँ, लुप्त होता जा रहा जैसे मैं है। हमें पता है कि मान लो कि मैंने कोई जी, लेक्चर लगाना है, ठीक है, तो मैं राइट राइट। मुझे कम से कम अगर मैंने कोई 1-1.5 घंटे का लेक्चर लगाना है तो मुझे मिनिमम 25 to 30 मिनट्स जो मैं मेरे अकॉर्डिंग है राइट, कि कम से कम चाहिए कि मैं उसको प्रिपेयर करूं, देन मैं डिलीवर करूं। ट्रू ट्रू। तो राइट। कई बार क्या है कि जैसे ये गवर्नमेंट सिस्टम में सिस्टम ही कुछ ऐसा बन रखा है कि हम जाते हैं क्लास में, बुक खोलते हैं, पढ़ाते हैं, आ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब जिस जैसे सोचकर हमने जॉब को ज्वाइन किया था तो वैसे कर रहे हैं। मतलब अगर मैं ये बात करूं कि आज से 5 साल पहले भी जो मेरे माइंड में था आज भी वही है। और जब मतलब तक वो ऐसा नहीं है पूरा कि नहीं जैसे होगा। जो जी गोल जी है सर। जो मैंने ना 2019 में इंडक्शन प्रोग्राम लगाया था नेटर में। राइट मुझे वो सर, सर का राइट। नाम याद नहीं है, विधु मोहन मैम का तो नाम याद है, सुनील दत्त सर थे, ओके, कोई एक्सपर्ट लेक्चर था, वो भी बाहर से आए थे। राइट तो राइट सर, उन्होंने राइट। जैसे वहां पर बात हुई तो वो बोलते कि ये आप मतलब क्या करना, मतलब जैसे तभी 6 मंथ्स ही हुए थे मुझे ज्वाइन किए। जी और जी जी जी। मैंने बोला था कि हाँ भी टीचिंग करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि क्योंकि मेरी लाइफ भी टीचिंग नहीं बदली है, तो ये राइट ट्राई रहेगा कि मैं भी किसी की लाइफ बदल सकूं। राइट सर, राइट। बट आज उस मतलब बात को भी 5 साल होने को आए हैं, अभी भी मैं वहीं पर ही हूँ। कैन रियली अंडरस्टैंड सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि वही बात है कि जब तक इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट और उसको हम अपनी लाइफ में कहीं अपना नहीं पा रहे हैं तो उसका कोई ज्यादा हम पे प्रभाव, कोई इन्फ्लुएंस होता नहीं है, राइट। इट हैज टू बी अल्टीमेटली हमारी लाइफ की रियलिटी, या कहीं ना कहीं हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए। एंड एज इट इज यूर ऑल टेक्निकल टीचर्स, तो आप लोग सब जानते हैं कि यस जब तक उसका वो प्रैक्टिकल हम लोग एप्लीकेशन नहीं देखते हैं तब तक यस हमें ऐसा लगता है कि यस थिंग्स हैव नॉट शेप्ड अप, राइट। अब उसमें जो मैं एक चीज बस कहना चाहूंगी गगन सर कि जब ऐसी दुविधा वाली सिचुएशंस बन जाती हैं जहां हमें समझ नहीं आ रहा है कि यस हम अपने से करना चाह रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं है, तो उसमें बेसिकली जस्ट ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल, राइट। वो जो आपको जो भी आपको सिचुएशन में, हर सिचुएशन में देर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, टू टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स। वन इज जो हमारे कंट्रोल में है, राइट, जिसको हम बदल सकते हैं, जिसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो वो कंट्रोलेबल है, जो हमें लगता है कि हमारे अकॉर्डिंगली यस उसमें बदलाव आने की संभावना है, या बल्कि बस वही बात है कि हमारे थोड़े से एफर्ट की या कोशिश की जरूरत है। अदर इज अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल कि यस कैसा वर्क एनवायरनमेंट है, कैसे लोग हैं आसपास, कैसी मैनेजमेंट है, विच इज ऑफ कोर्स हम उसको ज्यादा नहीं बदल सकते हैं बिकॉज वो डेफिनेटली एक्सटर्नल है, राइट। सो आपको लगता है कि आपकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें कुछ कंट्रोलेबल भी है जो आपके कंट्रोल में है? मैम मैं ना एक जैसे आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। मान लो कि मैं जी, क्लास ले रहा हूँ और राइट राइट सीनियर कोई भी है, चलो XYZ, उन्होंने मुझे बुला लिया। राइट राइट सर, अब अगर मैं नहीं जाता तभी भी दिक्कत है, राइट ठीक है। अगर मैं जाता हूं तो मेरे मतलब जो वो बोलते हैं ना इनर पीस है, फिर वो जी, डिस्टर्ब होता है कि भाई मैं तो यार पढ़ा रहा था, मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे। राइट राइट राइट, ट्रू। राइट राइट। अब ये बिल्कुल। आप ऐसी जी, सिचुएशन बताओ, ये कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है? देखिए सर गगन। इसमें वही यस अनुपमा मैम। नहीं मैम, मैं उसकी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। ही इज माई बेस्ट कलीग ओके हियर, ओके वी आर ओके फ्रॉम द सेम ओके, कॉलेज। राइट मैम, राइट, ओके। मैम मैम कल हमने ना एक
अटेंड किया था लेक्चर बाय विदु मोहन मैम, तो उनमें Right. उन्होंने फिर हमारे को बताया था, तो लाइक वी बोथ, हमारा ज्यादा जो नंबर आया था वो टेडी बियर में आया था, सो वी आर Okay. मोर टेडी बियर टाइप। तो मैम हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम नो ही नहीं बोल सकते, और इसलिए हाँ. ये सारी सिचुएशंस हमारे साथ होती रहती हैं। Right, exactly. Okay, wonderful, and I'm glad कि yes आपको at least अपने बारे में थोड़ा और समझ आ पाए कि yes हम ना नहीं बोल सकते हैं, और वो हमारा yes वो कहीं ना कहीं हमारी एज एन इंडिविजुअल हमारी पर्सनल एक सिचुएशन है, उसको मैं प्रॉब्लम नहीं कहूंगी, लेकिन हम ऐसे ही हैं, राइट। फिर दूसरा होता है कि यस, कमिंग बैक टू कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल, जो गगन सर से हम बात कर रहे थे। अब गगन सर, जो मतलब इस टाइम पे जो आपको बुला लिया गया वो अनकंट्रोलेबल था, ये तो आप समझते हैं, राइट, कि जो भी यस मैनेजमेंट का जो भी था उसमें वही चीज है कि वो आपकी मर्जी से नहीं था, या आपको पूछ के यस वो डिसीजन नहीं लिया गया था। तो जो आपकी मतलब जिसमें आप इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मतलब इट्स एन एक्सटर्नल फोर्सेस आपके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, वो अनकंट्रोलेबल है। लेकिन जो आप बुरा फील कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि यार मैंने ये इनजस्टिस किया, राइट, मैंने क्लास छोड़ दिया और मतलब मुझे खुद को वो पर्सनल पीस नहीं मिल पा रहा है, वो आपके कंट्रोल में है, वो आपका इमोशन है, वो नहीं आपकी मैम, फिर तो आपकी ये अवस्था है। मतलब ये तो जी। वही बात होगी कि जैसे फिर तो सरकारी बाबू बन जाए कि भाई जो होता है होने दो, हमें तो अपना मतलब हम अपने आप को ही कंट्रोल करते रहे। मुझे तो नहीं लगता कि ये सही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सर, अगर तो फिर हाँ, उस लेवल का अगर आपको कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन लाना है, तो फिर तो डेफिनेटली आपको यस यू वुड हैव टू स्पीक अप ऑल्सो। आपको बताना भी पड़ेगा, आपको अपनी चॉइसेस रखनी भी पड़ेंगी, राइट, कि यस इस वक्त क्लास चल रहा है, तो कैन आई रिक्वेस्ट कि मे बी मैं 10 मिनट बाद या इफ इट्स नॉट एन इमरजेंसी, एंड आई थिंक बोलने से बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट चीजें क्लैरिफाई हो जाती है, आपको भी पता चल जाएगा कि आपको जिस भी काम के लिए बुलाया गया है वो कितना अर्जेंट है। अगर वो कहते हैं कि नहीं 10 मिनट भी इंतजार नहीं किया जा सकता है, तो यू वुड ऑल्सो फील कि नहीं नहीं अर्जेंसी है। दूसरा, आपने अगर बात बता दिया है, अपनी तरफ से शेयर कर दिया है कि क्लास चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ही अपने आप से रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मैंने अपने आप से कोशिश नहीं की कम से कम, राइट। मैक्सिमम टाइम्स जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि मैं कुछ कह ही नहीं पाया, मैं उसमें और हेल्पलेस या और ज्यादा कहीं ना कहीं अपने आप में बाधित महसूस कर रहा था। डॉक्टर गरिमा, यू वांटेड टू से समथिंग, प्लीज मैम। Yes, ma'am. Thank you. Yeah, Gaganji please, and please. Anupama, ma'am, there have been a few similar instances with me. So I would just like to suggest, शायद कहीं पे वो चीज़ help हो पाए. तो in situations, because I think most of the institutes आजकल NAC training और inspections में busy हैं, तो suddenly meetings हो जाती हैं, तो वो disruption आ रहा था. तो उसके लिए what I have done is, एक तो हमने अपने हर एक subjects में एक portfolio introduce कर दिया हुआ है. तो पोर्टफोलियो इज अ रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट जो हम करवाते हैं बच्चों को, जिसके लिए हमें टाइम उनको थोड़ा सा देना ही होता है. तो अगर सडनली कभी भी अगर ऐसा कुछ आ जाता है, तो दैट टाइम इज कन्वर्टेड फॉर दैट. तो वो बच्चों को बता दिया जाता है. दूसरी चीज जो मैंने शुरू की है कि उस पर्टिकुलर क्लास का मेकअप क्लास या फिर ट्यूटोरियल अलग टाइम पे दे दिया जाता है बच्चों को. तो वो ये हो जाता है कि बच्चे जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं वो डेफिनेटली आ भी जाते हैं, और अगर सारे नहीं भी आते तो एटलीस्ट मुझे पता है कि मैंने वो टाइम बच्चों को दिया है. तो जो पढ़ना चाह रहा है वो आ रहा है. तो वो जो एक पर्सनल अनरेस्ट है कि शिट, आई कुड नॉट कंप्लीट माय लेक्चर, आई रियली वांट टू डू दैट, वो टाइम एटलीस्ट मैं निकाल करके अपने ही फ्री टाइम में से दे रही हूँ. तो एटलीस्ट वो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर मैं एक लेक्चर खराब करा मैंने, बिकॉज ऑफ वट एवर पर्सनल प्रोफेशनल ऑफिस रीजंस, वर्क, आई एम मेकिंग अप फॉर या दैट. सो स्टूडेंट को भी वो टाइम आपके साथ मिल जाता है, और आपको भी ये दिख जाता है कि चलिए आपने उनको उस वक्त क्लास में एक असाइनमेंट या पोर्टफोलियो का टाइम दे दिया, और अलग से आपने उनको एक मेकअप सेशन या ट्यूटोरियल दे दिया. तो वो आपका क्लास डिस्टर्ब नहीं होता है. और गगन जी, अगर आप इतने पैशनेट है ना टीचिंग के लिए, तो आपके बच्चे जानते हैं वो चीज. वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि टीचर ऐसे ही जा रहा है. तो उस चीज का आई थिंक दे नो द डिफरेंस बिटवीन अ टीचर हु इज रेडी टू टीच एंड समबडी हु इज जस्ट डूइंग अ फॉर्मेलिटी. बिकॉज यूनिवर्सिटी तक आते बच्चे बच्चे मेरे ख्याल से नहीं रहते, दे आर एडल्ट्स टू जज दैट ऑल्सो.
Right, right. वंडरफुल डॉक्टर गरिमा। गगन जी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ थोड़ा सा कुछ मसला हल हुआ? हाँ, यस मैम, मुझे लग रहा है कि हाँ ट्राई करेंगे। Yes, yes, very true. In fact, I think that's the best. At least everything starts around rest. At least try and give it a try. In fact, डॉक्टर गरिमा ने जो बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे समझते हैं, बच्चे सच में सेंस करते हैं. इनफैक्ट नॉट एट कॉलेज लेवल, बिकॉज आई वर्क विद इवन स्कूल किड्स ऑल्सो. बच्चे वो देख लेते हैं कि वो जो टीचर का जज्बा है, जुनून है. इनफैक्ट दैट इज द सोर्स ऑफ कहीं ना कहीं कनेक्ट विद दीज चिल्ड्रन ऑल्सो, राइट? वो फिर आप कई बार इनफैक्ट अगर आप 40 मिनट्स का क्लास भी नहीं ले रहे हैं, अगर आप वो 10 मिनट में भी वो बात उनको समझा रहे हैं ना, आप उसमें वो ज्यादा जस्टिस कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि मेरे पास टाइम कंस्ट्रेन है, राइट? लेकिन फिर भी यस, जो बात इंपॉर्टेंट है, जो उन तक पहुंचनी चाहिए, आई शुड बी एबल टू बी वेरी क्लियर एंड यस, अपने आप से मैं बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊं. एंड आई थिंक वही बात है कि इफ इट्स अ पैशन, तो उसमें अगर आप एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहे हैं तो आपको उसका वो महसूस नहीं होगा कि मैंने कोई मतलब कुछ आउट ऑफ द वे जाके किया है. आप अपने आप को पर्सनल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. नाउ बिलीव मी दैट, नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ टीचर आपको महसूस हो रहा है कि आपने अपना क्लास मिस कर दिया, आपका जो एक्चुअली जो टीचिंग लर्निंग टाइम था वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया, तो जिसमें आपको पर्सनल डिससेटिस्फैक्शन हो रही है, तो जब आप एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी भी आप होते हैं. वो आप अपने आप को पर्सनली सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि भैया मैंने अपने आप से जस्टिस किया है, मैंने कम से कम उसमें कोई आनाकानी या कोई शॉर्टकट नहीं लगाया है, राइट? यस मैम। या इनफैक्ट आई बिलीव एज ह्यूमंस हम लोग बड़े सेल्फिश होते हैं. हम इनफैक्ट एज इट इज कुछ भी नहीं करते हैं विदाउट आवर सेल्फिश मोटिव्स. I run, in fact, I'm a life skills trainer and I run an NGO also parallel with that, right? और वही बात है कि यस, जो एक किसी के निजी स्तर पर जाकर या एक वो जो एक इंसान जो जिंदगी में कहीं पिछड़ गया है, या जिसको उस लेवल का मे बी फैसिलिटी या बेनिफिट्स नहीं मिल पाए, अगर आप उसको जाके मदद करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ बहुत महान किया है. वो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है कि यस, आप एक और जिंदगी को अपलिफ्ट कर पाए. सो एज ह्यूमंस हम लोग कुछ भी वेरी फ्रैंकली विदाउट सेल्फिश मीन्स करते ही नहीं है. Okay, now something very important in relevance to what Gaganji has had to share, and I think जिसमें डॉक्टर गरिन मैम ने भी बहुत important input दिया है, वो है the concept of Johari window. This last concept I really wanted to share. Oops, sorry. Yes, I think my slide is visible. Yes, ma'am, it is. Yeah, okay, great. So now this is again for our own self. सबसे पहले अपने आप के लिए. Yes, मैंने वही कहा कि जब हम खुद satisfied नहीं होते हैं तो हम किसी के लिए भी एक what you say, एक happy situation create ही नहीं कर सकते हैं. अब जिसमें बहुत कुछ है जो हमें अपने बारे में पता होना चाहिए. I think yesterday you said विदु मोहन मैम ने भी कुछ आपके साथ उस तरह का ही सेल्फ अवेयरनेस प्रो किया था, बट फिर भी कहीं गैप्स रह जाते हैं. एंड दिस इज ये हम सबकी पर्सनालिटी में, सबकी एक प्रवृत्ति में होता है कि हम कितना अपने बारे में जानते हैं और कितना अभी भी अनएक्सप्लोर्ड रह गया है या अननोन रह गया है, राइट? अब जो ग्रीन एरिया है दैट इज ओपन एरिया. ओपन एरिया जैसे एक खुली किताब की तरह, जो सच्चाई, जो असलियत आप अपने बारे में जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटी, स्किल सेट, वही बाहर की दुनिया को भी पता है. तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि which is hidden or which is secretive, right? So it's a complete open book or a free area. So whatever information or knowledge you have about yourself, that is equally available to the people around or to the world outside. अब ऐसा है कि यस, फिर उसमें कुछ ऐसा है जो ब्लाइंड एरिया में आता है. ब्लाइंड विच इज द येलो एरिया, जो कि बाहर की दुनिया को तो पता है आपके बारे में, लेकिन आपको खुद अपने बारे में नहीं पता है. इट इज अननोन टू वन सेल्फ बट नोन टू अदर्स. इसमें कुछ सोच सकते हैं कि क्या आता होगा? What aspects must be coming in the blind area? Anything which is known to others, the outside world knows about you, right? लेकिन आपको खुद उसके बारे में जानकारी नहीं है. Unknown to oneself. तो ऐसे क्या ब्लाइंड एरियाज होते होंगे हमारी पर्सनालिटी में? Any one of you wants to give it a try?
how we react in a particular situation, I think, is हाँ, observed yeah, better by yeah. others. ट्रू, वंडरफुल डॉक्टर गरिमा, एग्जैक्टली, मैक्सिमम टाइम शायद हमारी शॉर्टकमिंग्स, हमारी जो कहीं एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, आई वुड से इन अ मोर पॉजिटिव वे, राइट, कि हाउ डू वी रिएक्ट, और हाउ डू वी एकदम से वी लूज आवर टेम्परमेंट, और हाउ डू वी गेट एब्सोल्युटली इनटॉलरेंट अबाउट समथिंग, राइट, जो कि मुझे लगता है कि यस, मैंने ठीक किया, या मुझे उसके बारे में जानकारी ही नहीं थी कि वो दूसरे को कितना बुरा महसूस हो गया, या कितना, यस, मैंने एक तरह से एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी, राइट, सो आई माई सेल्फ आई एम ब्लाइंड टू इट, but the others know कि how much it was a kind of a chaotic situation, या कितना ज्यादा आपने दूसरों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अक्सर हमें दूसरे हमारे लिए क्या गलत कर रहे हैं, या कैसे हमें सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, या कैसे हम पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहे हैं, ये हमें समझ आता है, लेकिन बहुत बार हम भी वो रीजन बनते हैं, राइट, हम भी वो कारण होते हैं जहां पे हमारी प्रेजेंस में पीपल आर नॉट कंफर्टेबल, people don't want to open up, they don't want to connect with us, right, and maximum times हम खुद उसको लेकर ब्लाइंड होते हैं, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसमें दूसरों से फीडबैक लें कि मेरा जो प्रेजेंस था, जैसे how do my students feel in my presence, how much do they feel like, yes, kind of opening up, asking questions, clarifying their doubts, या ऐसा है कि मेरी प्रेजेंस में वो और दुबक कर बैठ जाते हैं, वो और ज्यादा कहीं ना कहीं अपने आप में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, राइट, तो ये बात अगर मुझे नहीं समझ आ रही है, या इसको मैं नहीं कहीं ना कहीं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ टुवर्ड्स दिस रियलिटी ऑफ माय पर्सनालिटी, तो कहीं ना कहीं अगेन आई एम क्रिएटिंग more disturbance or turbulence in the lives of people around and in the whole environment. फिर उससे उठकर एक है हिडन एरिया, दैट इज द ब्लू एरिया, राइट, हिडन एरिया जो कि यस मुझे पता है अपने बारे में, लेकिन मैं इसको दुनिया को दिखाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको छुपा के रखना चाहता हूँ, जो कि हम सब की कहीं एक एक सीक्रेट साइड होती है जिसको हम हाइड करके रखना चाहते हैं, एंड वी डोंट वांट टू शेयर इट, और वी डोंट वांट टू ओपन अप it to the world because of which it is unknown to others. तो ऐसी कौन सी hidden reality होती है मैक्सिमम हमारी, ऐसे कौन से सच है हमारी अपनी जिंदगी के बारे में जिसको हम हिडन ही रखना चाहते हैं, या हम दूसरों को रिवील नहीं करना चाहते हैं? एनीथिंग? गगन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? हम अपनी जिंदगी के बारे में क्या छुपा कर रखना चाहते हैं, और जब हम उसको हाइड कर रहे हैं तो यस, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम संभावना यही है कि उसके बारे में औरों को भी जानकारी नहीं है। We will try to hide that thing in that particular podium also. We will try to जी hide सर, that one here जी also. I जी don't think anyone can या open या it up over here. नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ सर, आपको अपने राज नहीं खोलने, मैं ये कह रही हूँ वो किस तरह की सिचुएशंस या क्या संभावनाएं होती होंगी, एंड आपको पर्सनली तो कुछ भी नहीं बताना है, इन जनरल आपको क्या लगता है कि लोग क्या छुपाने की कोशिश करते हैं? मैम, द रियल सेल्फ। द रियल सेल्फ, ओके ग्रेट, एंड अनुपमा मैम, वो रियल सेल्फ में क्या आता है? मतलब हमारा मैम, एक हमारा आपकी जी आप, जी आपकी एक प्राइवेट सेल्फ होती है विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर योरसेल्फ, जो किसी को भी नहीं राइट पता होती, राइट और राइट वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो दूसरा इंसान उसको देखे आया, क्योंकि कई बार इसमें हमारे बैड डिजायर्स भी होती हैं। हाँ एग्जैक्टली, आई थिंक नाउ दैट्स द क्लिक मैम, जो हमारे बैड डिजायर्स होते हैं उसी को हम छुपाना चाहते हैं, अदरवाइज तो टुडे इट्स अ वेरी ओपन वर्ल्ड। अगर हम देखें स्पेशली विद दिस सोशल मीडिया कमिंग इनटू दिस सिनेरियो, वी रियली ओपनड अप, इनफैक्ट टुडे तो आज तो हमें अपने आप को लिमिट ही नहीं करना आता है कि किस हद तक अपने आप को पब्लिकली पोर्ट्रे करना है, या कहाँ पे वी हैव टू हाइड आवरसेल्व्स आल्सो एट टाइम्स, right? But I think when it given a choice, we would particularly just like to hide the dark sides of our reality. Dark sides जो हमारी जिंदगी की कहीं गलतियां हैं, हमारी जिंदगी के मिस्टेक्स हैं, फेलियर्स हैं, राइट, या फिर वीकर साइड्स ऑफ आवर लाइफ जिसको हम नहीं चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि ये भी हमारी एक कमजोरी है, isn't it? Right? And then
I mean, if anybody has a difference of opinion. नहीं एग्जैक्टली मैम, समटाइम पीपल जी used to have a जी relationship and after arranged marriage they kept it as a secret from yeah say partner. right So that right sir that is not a dark side. right That may be something that we do not like to share Mhm. with her or him. या एग्जैक्टली सो हाँ नहीं डार्क नहीं मतलब वही चीज है कि जो एक तरह से हमें लगता है कि हमें उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी राइट हम उसको मैक्सिमम उसी को हाइड करना चाहते हैं कि जहां वही बात है कि देयर बी सोशल टैबूज टू इट देयर बी पीपल हैविंग देयर ओन ओपिनियंस राइट और हम ज्यादा उसमें व्हाट डू यू से किसी तरह के there's a term for it मतलब आई एम फॉरगेटिंग दैट एग्जैक्ट टर्म कि जो जहां पे वही बात है कि हमारे बारे में बातें बनना लग जाए तो हम वो ज्यादा उन चीजों को मे बी सीमित ही रखना चाहते हैं खासकर जहां पे एक्सेप्टेंस के चांसेस कम है Lastly, we move to the red area, which is unknown area. Unknown area is yes, जहाँ पे मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि मेरे अंदर ये ऐसी कोई कैपेबिलिटी ऐसी कोई अच्छाई है और जब मुझे ही नहीं पता है तो मैक्सिमम चांसेस में यही है संभावना कि आसपास लोगों को भी नहीं पता तो इट्स एन एब्सोल्यूट कंप्लीटली एन अननोन एरिया और एन अनएक्सप्लोर्ड एरिया नाउ क्या लगता है to be more progressive to be more in fact somebody who wants to change somebody who wants to grow out somebody who wants to develop more right or somebody who wants to have more healthier relations हमें अपनी कौन सी साइड ऑफ पर्सनालिटी को ज्यादा ब्रॉडन ज्यादा बड़ा करने की जरूरत है ओपन ब्लाइंड हिडन या अननोन ज्यादा प्रोग्रेसिव रहने के लिए खुद सेल्फ प्रोग्रेस के लिए और ज्यादा अपने रिलेशंस को और बेहतर और ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए हमें अपनी पर्सनालिटी का कौन सा हिस्सा ज्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत है ओपन ब्लाइंड हिडन या अननोन एनी वन ऑफ यू ओपन ओपन ओ वेरी नाइस थैंक यू सो मच हमीद सर आई एम ग्लैड कि यस आप हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं और आप उन चीजों के साथ जुड़ भी पा रहे हैं सो हमीद सर इफ यू ओपनड अप या आपने बोला है तो आप बताना चाहेंगे आप क्यों लगता है कि हमें अपना ओपन एरिया एक्सपैंड करने की जरूरत है मैम जी हाँ सो आपको क्यों लगता है सर आप बिल्कुल सही कहा है आपने कि हमें अपना ओपन एरिया और बड़ा करने की जरूरत है बट क्यों आपको यस यू मतलब ये क्यों महसूस हुआ जो मेरा क्वालिटी है उसको दिखाना है दुनिया में और राइज करके इंक्रीज करके इसलिए मेरा उसी में उसी से पहचान राइट होगा राइट बिल्कुल एग्जैक्टली उसी से आपकी ज्यादा पहचान होगी बल्कि अगर आपका कोई ऐसा मतलब जो ब्लाइंड एरिया भी है जिसको आप खुद नहीं देख पा रहे हैं उसके लिए भी लोगों से फीडबैक लीजिए इनपुट लीजिए कि कहीं ये मेरी कमजोरी तो नहीं है या कहीं ये मेरी इनकेपेबिलिटी तो नहीं है जहां पे मुझे अपने आप को सुधारने की जरूरत है एंड जब आपको वो सही फीडबैक मिलता है तो डेफिनेटली आपके चांसेस ऑफ सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन बेहतर हो जाते हैं कुछ भी जो आप ऐसा कर रहे हैं जो आपको लगता है कि आपको ज्यादा हाइड करने की जरूरत है राइट और किसी के साथ ना सही कम से कम अपने आप को वो एक्सेप्टेंस दीजिए अपने आप से यस उस चीज को पूरी तरह से मतलब ओपन अप करने की कोशिश कीजिए बल्कि बिफोर इवन यू कन्फेस टू द वर्ल्ड कन्फेस टू योरसेल्फ राइट और फिर वही बात है कि उसमें भी एक प्रायोरिटाइजिंग होना चाहिए कि ये बात जो मैं दूसरे से छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ वो इंसान मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है अगर वो इम्पोर्टेंट है तब फिर मुझे लगता है कि हमें अपने रिलेशंस को अपनी कन्वर्सेशंस को और ज्यादा ओपन अप करने की जरूरत है बल्कि उसमें फिर कोशिश करें कि हम ज्यादा हिडन सीक्रेट्स या हिडन रियलिटीज ना रखें we don't need to open up to everybody now that's what is I'm trying to make it very important very you know yes in fact significant right कि वही चीज है कि आपको ये जरूर याद रखना है कि आपको
कुछ लोगों के साथ, खासकर जो आपकी जिंदगी में बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है और मायने रखते हैं, उनके साथ यू हैव टू हैव एन ओपन रियलिटी, राइट। और दूसरा, जैसे हमीद सर ने कहा कि हमें अपनी ओपन पाथ को ज्यादा बड़ा करना है, उसके लिए वी नीड टू कीप एक्सप्लोरिंग, वी नीड टू कीप मीटिंग न्यू पीपल, वी नीड टू कीप हैविंग ओपन कन्वर्सेशंस, राइट। उनके बारे में भी जानिए, अपने बारे में भी बताइए, और जहां लगता है कि अब अपने आप को कहीं सुधारने की जरूरत है, बेहतर बनाने की जरूरत है, वो कोशिश कीजिए, उनसे फीडबैक भी लीजिए, उनको भी यस अपना रेलेवेंस अपना इनपुट दीजिए। तभी आई थिंक हम अपने रिलेशंस में और ज्यादा ओपन अप हो पाते हैं, और ज्यादा यस बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। देन वी आर एबल टू हैव मोर हेल्दियर एंड ट्रस्टवर्दी कन्वर्सेशंस। जितना हम चीजों को छुपाने की कोशिश या चीजों से अनजान रहने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा यस थिंग्स same it goes back to our personal space and even in our professional capacity, right? It's all time up, but last 3 minutes, one video that I really wanted to play, and I think it sums up the whole crux of this whole session. So one last video I will be playing, and after that, yes, Vikas sir, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम, जी जो जी लास्ट विंडो था, that was unknown जी to you and unknown to unknown, yes, others. yes, How yes. we can explore it? And Wonderful, wonderful. Thank you so much, Vikas sir, for coming up with that question. It's a very, very important question. And अगर वो unaddressed रह जाए तो ये पूरा जो हमने process किया था ये insignificant हो जाता है. It is putting yourself into more, new or daring situations helps you to create your unknown, मतलब move on from your unknown to known. आपने जो पहले जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया है, राइट, जब आप उसको पहली बार ट्राई करते हैं, तो वही बात है कि उसके बाद ही हमें जानकारी मिलती है कि अरे ये भी मेरी काबिलियत है, ये भी मेरा पोटेंशियल है। लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन, राइट, पहाड़ चढ़ना, वही चीज है कि आप दूर बैठकर यही सोच रहे हैं कि मैं पहाड़ चढ़ ही नहीं सकता हूँ, वो मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन अचानक से एक दिन आप कोशिश करते हैं, आप ट्राई करते हैं या एटलीस्ट इनिशिएट करते हैं, और जब आप कुछ कदम चल लेते हैं या कुछ रास्ता पार कर लेते हैं, तो आपको लगने लगता है, विश्वास आने लगता है कि नहीं, इवन दिस इज माय कैपेबिलिटी। सो व्हेन वी कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, व्हेन वी कीप पुटिंग आवरसेल्व्स इनटू न्यू और सिचुएशंस, और वी स्टार्ट टेकिंग अप न्यू challenges, I think then we convert our unknown to known, right? So we need to keep experimenting, we need to keep exploring new, and that's how our unknown area opens up into a known area. I hope Vikas sir मैं आपके question का answer दे पाई. thanks, ma'am. Well, you're most welcome. So one last Yeah, video ma'am. before we disperse. You're most welcome, sir. Yeah. Okay, I think my video is visible. Yes, my video is visible and audible. नहीं, अभी नाम नहीं सोचा है। Yeah, ma'am. हाँ, इधर ही Clear है। and audible. कल डिस्चार्ज हो गया। Great. पापा आप कुछ बोलिए ना मुन्ने से। आप कुछ बोलेंगे, ये लीजिए, बात करिए अपनी। प्यारे मुन्ना, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। ये बहुत ही सुंदर, अनोखी और प्यारी जगह है, और तुम्हें इसे और भी सुंदर और भी प्यारी बनाने के लिए भेजा गया है। भेजा किसने, ये आज तक कोई नहीं जान पाया, और शायद जान के कुछ हासिल भी नहीं होगा। इसलिए ऐसे सवालों पर अपना समय बर्बाद मत करना। हम सबके पास एक सीमित समय होता है, और जितना भी हो कम ही होता है। इस दुनिया में इतना कुछ है देखने को, जानने को, महसूस करने को, कि तुम्हारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं है बर्बाद करने को। संभावनाएं असीम है, तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इस दुनिया को बदल सकते हो। हर दिन कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया समझना। और अगर कभी किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो तो याद रखना, ना करके पछताने से कहीं बेहतर है करके पछताना। क्योंकि कोई काम करके अगर कुछ और ना भी मिला तो तजुर्बा मिलेगा, और वो बहुत ही कीमती होता है।
हर चीज का तजुर्बा करना, लेकिन किसी भी चीज की आदत मत डालना। तजुर्बे तुम्हें सही और गलत में फर्क करना सिखाएंगे, गलतियां करने से बचाएंगे, पर गलतियां करने से डरना मत। गलतियां वही करते हैं जो कुछ करते हैं। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना, उन्हें सुधारना, दूसरों की गलतियों को माफ करना, उन्हें उसे सुधारने का मौका देना। कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, कोई जानबूझकर बुरा बर्ताव भी नहीं करता। किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। इसलिए सबको वही मौके देना जो खुद को दोगे। सबसे उतनी ही नरमी बरतना जितना खुद पे बरतोगे। सबकी इज्जत करना, सब पे भरोसा करना और सबसे प्यार करना। इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है बेटा, और सबको इसकी बहुत जरूरत है। तुम्हें भी होगी। मांगने में हिचकिचाना मत और दिखाने में झिझकना मत। जिंदगी बहुत छोटी है, शर्म के लिए, संकोच के लिए आए ना आए, जी खोल कर नाचो, गला फाड़ के गाना, मन भर के खाना, खुल के हंसना और जोर से रोना, जैसे तुम अभी रो रहे थे फोन पर। बस शरीर से ही बड़े होना, मन से नहीं। जिस दिन अंदर से ये बचपना गया, ये मासूमियत गई, उस दिन समझो जिंदगी गई। भविष्य के बारे में सोचना, पर चिंता मत करना। बीते दिनों को याद करना, पर उनमें खो मत जाना। जिंदगी में कुछ अच्छे दिन आएंगे, कुछ बुरे। अच्छे दिनों में घमंड न करना और बुरे दिनों में हताश न होना। सफलता का सारा श्रेय खुद को मत देना और असफलता का जिम्मा दूसरों पे मत थोपना। बेटा बस आगे बढ़ते जाना, खुशियां बांटते जाना, और ये जरूर याद रखना कि तुम्हें यहाँ सिर्फ एक ही कारण से भेजा गया, कि तुम इस दुनिया को और भी सुंदर और भी प्यारी जगह बना सको। ढेरों आशीर्वाद के साथ तुम्हारा दादा। Okay, so this was a video from a grandfather to his born grandson, दादाजी का अपने पोते के लिए, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी भर का तजुर्बा जो कि प्रोफेशनल सिनेरियो में भी रहा होगा, पर्सनल फेस में भी रहा होगा, राइट, एंड कैसे उन्होंने हर जगह अपने जो भी रिलेशंस थे या जो पर्सनल एक अपना जो एक जो नजरिया था जिंदगी को लेकर, राइट, या कैसे वो ग्रो आउट करते गए, वो सारा शेयर किया है. So I believe it was the crux of everything that we had talked about. So basically, I think in the end, something very beautiful दादाजी said कि आप इस दुनिया में जब आए तो आपसे पहले भी ये दुनिया exist करती थी. There was a lot of work happening. There were a lot of developments taking place around, right? लेकिन आपके आने के बाद क्या progress हुआ, क्या development हुआ, how could make a change in the lives of others matters all about. राइट, सो वही चीज है कि यस, उसमें इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तो अपना ध्यान रखिए, खुद अपने आप को इंस्पायर्ड रखिए, अपने लाइफ के पर्पस, अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव को जानिए, एंड फिर क्या लगता है कि जो आप प्रोफेशनल सिनेरियो में कर रहे हैं, क्या आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव और आपका प्रोफेशनल गोल वो आपस में कोलैबोरेट करता है? अगर करता है, देन आई थिंक देयर शुड बी नो लुकिंग बैक, राइट, देयर शुड बी नो कंप्लेंट्स. अपनी तरफ से बेस्ट कंट्रीब्यूट कीजिए, एंड इन रिटर्न यस, कहीं ना कहीं अगर उसका एक्नॉलेजमेंट, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक्नॉलेजमेंट या एप्रिसिएशन नहीं भी मिल रहा है, कीप अपलॉजिंग योरसेल्फ. अपने आप को यस, कहीं ना कहीं वो हमेशा याद दिलाते रहें कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं. इनफैक्ट दे से एवरी मॉर्निंग वेक अप विद डिटर्मिनेशन एंड एवरी इवनिंग, एवरी नाइट स्लीप विद सेटिस्फैक्शन, राइट. जितना आप अपने आप को कंग्रेचुलेट कर सकते हैं, बधाई दे सकते हैं या अप्रिशिएट कर सकते हैं, उतना कोई भी नहीं कर सकता है. एंड वो एक जो लोगों की जिंदगी में भी कमी है, दैट अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड, प्लीज कीप पासिंग इट ऑन फर्दर. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच.